Welcome back, students. In this video, we will be discussing about prevention of contagious diseases. There are many ways to remain safe from these kind of diseases, and we're going to learn about some of the ways जिनको हम यूज करते हुए अपने आप को इन diseases से safe रख सकते हैं. So let's discuss those ways. The first way is washing your hand. Remember, whenever you go outside or you are doing some work, always remember to wash your hand afterwards. Okay, so these are some of the steps that we can follow in order to properly and अच्छे से हाथ धोने का तरीका हम आज देखेंगे. Alright, so first of all you have to rub hands palm to palm. ठीक है, आपने सबसे पहले यूज करना है सोप और उसके बाद palm to palm यानी आपने अपने दोनों हाथों की हथेली में उस सोप को रख के you're going to wash your both hands and after that you're going to rub the back of your hand. ठीक है, आपने अपने hands के back side को अच्छे से rub करना है. उसके बाद palm to palm with the fingers interlocked. आपने अपनी fingers के दरमियान से जो है अच्छे से डर्ट को वॉश करना है. उसके बाद यू गोइंग टू back of the fingers to opposing palms with interlocked fingers. ठीक है, इस तरह आपने अपने हाथ को दूसरे हाथ के अंदर इंटरलॉक करके और वॉश करना है अपनी फिंगर्स को. डोंट फॉरगेट टू वॉश योर थम्स सेपरेटली एज वेल. और उसके बाद you are going to rub the fingertips into the palm of opposing hand. Alright, and then repeat for the both hands. आपने क्या करना है, अपनी finger tips जो आपके nails हैं उनको साफ रखने के लिए you're going to rub your fingertips in the palm. अपने हथेली में उसको रब करेंगे ताकि जो सोप है वो आपके नेल्स में जाए एंड इट वॉशेस द जर्म्स इनसाइड द nails as well. And may you have to make sure that you rub both wrists in a rotating manner and rinse and dry it thoroughly. आपने अपनी wrists को भी यानी आपने अपनी कलाई को भी अच्छे से वॉश करना है. उसके बाद मेक श्योर कि आप उसको पानी से धोएं और उसके बाद आप उसको टॉवल या टिश्यू पेपर से ड्राई कर लें. So this is the way we wash our hand thoroughly. Alright, so let's move on to the next way. The next thing you should do is wearing a mask. What do you know about a mask as a protection against COVID, and what are the benefits of wearing the mask? Mask is actually a protective barrier between your nose and the mouth and the environment. ये क्या करता है, आपके nose और आपकी जो बाहर की environment है उसके दरमियान में एक protective barrier है. ठीक है, and it does not allow germs to enter from environment into the body through nose or mouth. यानी आपके germs जो हैं वो नाक या मुंह से enter नहीं हो सकते if you're wearing a mask. All right, so let's remember how do we have to wear the mask properly, and these are the 5 mistakes that you should probably avoid in order to be safe. सबसे पहले क्या है, always remember to wash your hands before using the mask. ठीक है, और इससे क्या है कि अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि समटाइम्स पीपल आर नॉट कवरिंग देयर नोज और देयर माउथ, यानी अपना मुंह को नहीं या तो कवर करते या फिर नोज को कवर नहीं करते. दिस इज नॉट the right way to wear the mask as well, because either from both of these things the germs might enter into your body. इसके अलावा the third mistake people usually do is they keep on touching their mask और वो उसको बार बार adjust करते रहते हैं, which in return makes your hands go dirty as well. ठीक है, उसके ऊपर germs लग सकते हैं and it will not help you with the prevention of those diseases. The fourth mistake you guys do is you क्या करते हैं, या तो आप बहुत देर के लिए एक मास्क को यूज़ करते हैं या उसको बहुत देर बाद उतारते हैं, which is also a wrong thing to do. You have to make sure that your mask is neat and clean before you're using it. And the first mistake is that you should never reuse the mask. जो आप मास्क एक दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, you should be throwing it in the dustbin and you are going to use the new one the next time. All right, so let's discuss another way
you can keep yourself safe from the contagious diseases. Okay, so before we discuss about this way, I think you should know what vaccination is. All right, so vaccination is a simple and safe, effective way of protecting people against harmful diseases, ठीक है, before they come into contact with them. It uses your body's natural defenses to build resistance to specific infection and make your immune system stronger. ठीक है, अब vaccines क्या करती हैं कि अगर if you know that there is some kind of contagious diseases in your area, for example जैसे COVID आया था, तो उससे बचने के लिए जो अभी लोग affect भी नहीं हुए थे, we were asked to do the vaccination, right? और वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन में एक्चुअली हम वीक या डेड फॉर्म ऑफ जर्म्स लेते हैं जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, ठीक है। दिस स्पार्क्स योर इम्यून सिस्टम, ठीक है, एंड टू डेवलप एंटीबॉडीज दैट दे रिमेंबर द जर्म। हमारी बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी है कि जब भी कोई जर्म एंटर होता है हम उसके लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो उस जर्म से हमें फाइट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। द एंटीबॉडीज फाइट ऑफ द जर्म इफ दे इन्वेड अगेन। तो क्या होगा कि इस तरह जब हम ऑलरेडी एक डेड जर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी बॉडी में, तो द नेक्स्ट टाइम इफ सम काइंड ऑफ डिजीज कम्स इन आवर बॉडी इज ऑलरेडी इम्यून, इट ऑलरेडी नो व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इट इज एंड इट्स गोइंग टू फाइट इट ऑफ more better. All right, so that is why the vaccinations are very important for our immunity. See you guys in the next video, and we're going to discuss some other ways of maintaining a good health.